Hi guys, मैं हूँ बर्लिन में and today I'm going to try and cover the maximum shooting locations of the Netflix series Dark. सुबह के 9 बज रहे हैं, the sun is out bright and let's see how many locations I'm able to cover. So guys, I am at the place where it all starts, the forest, the night that changes everything in that particular series. If you have watched that series, Mikkel Nielsen suddenly he disappears after they hear a very strange sound from the cave. भाई 10 मिनट हो गए हैं मेरे को चलते चलते and the forest is getting a bit denser, so ये है पहली लोकेशन डार्क की शूटिंग की, द फॉरेस्ट. एंड काफ़ी सारे एरियाज यहाँ पे यूज़ हुए थे फॉरेस्ट के, बट आई वांट टू बस्ट अ मिथ कि जो भी यहाँ पे वो केव थी दैट वाज एक्चुअली अ सेटअप. यहाँ पे वो केव एग्जिस्ट नहीं करती है. सो गाइस, आफ्टर वॉकिंग फॉर अबाउट 20 मिनट्स, अब मैं आई डोंट नो, आई एम इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, but I actually don't know where I am. I can hear the birds chirping, the sun is out bright and I can also hear the cars around me. So इससे ये तो पता चल गया कि हाँ ठीक है, रोड नियर बाई है, क्योंकि मेरे को नहीं पता from where to exit. So guys, the next location that I am in is the lake. ये पर्टिकुलर एक शूटिंग लोकेशन है where you see in the series that Jonas goes back in time, और उस टाइम वाला जोनस और मार्था they are sitting together, they are swimming in the lake and Jonas बोलता है कि okay, I have to go back, I have a family function to attend or something, and as soon as he goes back 5 मिनट बाद एकदम से वो वाला जोनस आता है who goes back in time. So this is the location where that scene was shot. So I was looking for the exact location कि वो कहाँ पे शूट हुआ है, but I got to know कि वो एक particular location नहीं है. So there are different locations that they have taken the shot and created one scene. So this is one of the shooting locations which is the lake, but इसका exact spot नहीं पता, और I even searched कि कहाँ पे है वो, but I was not able to find it. So this lake is one of the shooting spots and there are other lakes as well that have been taken into one particular shot. The current location I am at, it is actually giving me the feel that I am in Winden. It is the neighborhood, the areas that have been taken into the shot for a particular scene, जहाँ से सारे actors, even Jonas, they go through. That is the particular area that I am in, and it feels actually that I am in the particular series Dark and the location Winden. So by this is a part of Jonas's neighborhood that is shown in the series Dark. मैं जोनस का घर देखने की कोशिश कर रहा था, बट द ऑफिशियल लोकेशन हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, सो आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट हाउस, बट इट इज़ सेड दैट इट इज़ अराउंड द आउटस्कर्ट्स ऑफ बर्लिन. सो गाइस, गेस वेयर आई एम नाउ. इट इज़ अ हॉट स्पॉट इन द सीरीज डार्क. सो नेक्स्ट क्लिप में आपको पता ही चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, बट स्टिल गिव इट अ गेस बिफोर द नेक्स्ट क्लिप कम्स. So guys, here I am at one of the major hotspot, or in fact I'll say the hotspot, the Winden School. यहाँ पे जोनस पढ़ता था, नीलसन फैमिली भी पढ़ती थी, जोनस की मॉम भी पढ़ती थी. So here's the look of the school, but I have to be a bit respectful because the actual school है, so I cannot go inside. Hello again guys. So the next location that I am going to is the church, and वो मेरी खुद की एक personal favorite है and I'm very excited to see. So I'm just 1.5 kilometers away I guess. So it will take around a 10 to 15 minute walk, and as soon as I reach there I'll show how it is, because वो भी एक small forest के बीच में है. So I'll catch you up later. So guys, I am nearby the church
और मैं पहुंचने वाला हूँ. दिस इज़ द एरिया अराउंड विच द चर्च इज़ एक्चुअली. सो इट इज़ एक्चुअली वेरी वेल मेंटेन्ड. काफ़ी अच्छा वाइब है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब फील हो रहा है. सो लेट्स सी हाउ द चर्च लुक्स लाइक. सो गाइज, दिस इज़ द आइकॉनिक चर्च जहाँ पे नोआ एंड जोनस इसके ऑपोजिट में एक बेंच पे बैठ के बात करते हैं. एंड it is actually sublime. This was the last location, and with this I would like to end this video. It was fun to cover all the locations in one day. That was what I decided. And मैं सुबह 9 बजे निकला था and अब रात के 9 बज चुके हैं. It doesn't seem like it, but हाँ, यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे अंधेरा थोड़ा लेट होता है. So guys, thanks a lot being in the video.